अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है वो हम अपना कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर के जो है वो कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे फॉर द एमडी कैट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल प्रेप पॉइंट। सो आपकी सीरीज़ हमने जो है फर्स्ट पार्ट 1 के एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी के हमने 3 चैप्टर्स जो हैं वो कवर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, सेल एंड स्ट्रक्चर। और अब हमारा उस पार्ट 1 में से जो 4th चैप्टर बन रहा है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसके आज हम एमडी कैट के लिहाज से एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन बैंक है जो जब मैंने एमडी कैट दिया था तो मैंने इन्हीं में से जो है वो तैयारी की थी और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो लोग ये वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह उनको बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो का। सो हम शुरू करते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इन ह्यूमन इज़। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए है 100 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी 120 मीटर पर सेकेंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके, 100 मीटर पर सेकेंड. So the next is two cerebral hemisphere communicate with each other by infundibulum, stalk, corpus callosum or corpus cavernosum. So the right answer we have is corpus callosum. Okay, the right answer is C, corpus callosum. Then next question is menstrual cycle in females is under control of limbic system, hypothalamus, pituitary or cerebrum. So the right answer is pituitary, C. Reticular formation is the characteristic of midbrain, forebrain, hindbrain and pons. So the right answer is midbrain. The number of cranial nerves are 42, 24, 36 or 12. So the right answer is 24 because 12 का पेयर होता है. Cell bodies of sensory neurons constitute option A dorsal root ganglion, option B dorsal root, option C ventral root ganglion, option D posterior root ganglion. So the right answer is dorsal root ganglion. What happens when the voltage reach to plus 35 millivolt? Option A sodium gets closed and potassium gates open. Option B sodium gates open and potassium gates close. Option C both sodium gates and potassium gates open. Both sodium gates and potassium gates close. So the right answer is sodium gates close, option A, and potassium gates open. Nodes of Renwier are exposed region of axon, option B insulated region of axon, option C terminal lobes at the end of the axon, option D Schwann cells present at equal distance. So the option A exposed regions of axons. So move toward the next part. Which of the following increase an action potential is initiated? Option A diffusion of sodium ions into neurons, option B diffusion of sodium ions out of neurons, option C diffusion of potassium ion out of neurons, option D diffusions of potassium ions into neurons. So the right option is A, diffusion of sodium ions into neurons. Medulla, pons and cerebellum are parts of forebrain, midbrain, hindbrain or limbic system. So the right answer is hindbrain. It is important in coordinating the movement of the body, cerebrum, medulla, pons or cerebellum. So the right answer is cerebellum. Saltatory transmission occur in option A non-myelinated nerve fiber, option B myelinated nerve fiber, option C cell body, option D continuous fashion. So the right answer is myelinated nerve fiber, option B. Neuroglia makes up as much as half of option A muscular system, B nervous system,
C. Glandular system. D. Skeletal system. So the right answer is nervous system. Motor neurons have short axon, option B, long axon, option C, long dendrites, option D, dendron. So the right answer is, so move towards next. Inaction potential depolarization, repolarization and recovery takes times. Option A, 2 to 3 seconds, option B, 2 to 3 minutes, option C, 2 to 3 milliseconds, option D, 2 to 3 microseconds. So the right answer is C, 2 to 3 milliseconds. Other names for associative neurons are association neurons, option B, motor neurons, option C, intermediate neurons, option D, presynaptic neurons. So the right answer is B, intermediate neurons. The part of the brain of vertebrates that controls automatic activities such as breathing, swallowing, heart rate, and blood pressure. Option A, pons, option B, medulla oblongata, option C, cerebellum, option D, reticular formation. So the right answer is medulla oblongata. The net difference of charges between the inner and outer surface of non-conducting neuron is called option A, membrane potential, option B, resting membrane potential, option C, active membrane potential, and option D, electrical potential. So the right answer is resting membrane potential. It is considered one of the three parts of forebrain and is further subdivided into three parts. Option A, thalamus, option B, hypothalamus, option C, limbic system, option D, cerebrum. So the right answer is limbic system, option C. The part of neurons which is already in resting potential is also considered to be in option A, polarized state, option B, depolarized state, option C, repolarized, option D, refractory state. So the right answer is option A, polarized state. The most important ions present in the neurons and surrounding fluids are option A, sodium and calcium, option B, sodium and potassium, option C, potassium and calcium, and option D, negative organic ions. So the right answer is sodium and potassium. Question number 22. Sodium ions are folds higher concentration outside or than inside the membrane of surface nerve cell. Option A 3, option B 5, option C 7, and option D 10. So the right answer is of question number 22 is, so right answer is option D 10. So these are the some MCQs that I solved for you. अभी जो है हमने 22 MCQs तक जो है वो किया है, अभी भी और 22 MCQs रिमेनिंग है. वो 22 MCQs जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर टू यू. होप सो कि प्रैक्टिस आपको हो रही होगी साथ साथ, एंड क्योंकि कोई भी ह्यूमन एरर इसमें हो सकता है इन केस, अगर वैसे तो बहुत कीनली सॉल्व किए हैं मैंने, बट इफ़ देयर इज़ एन आपको लगता है कि कोई MCQs मिस्टेक है, सो गौर से पढ़िएगा हर चीज़ को. एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट.